स्वयंसेवी काम की है वो बिखरती जा रही है, क्योंकि फंडिंग का जो हाल हो रहा है। और हमारे जितने भी आंदोलन हैं, अगर ज्यादातर आंदोलन देखें तो कहीं ना कहीं जीविका से जुड़े हुए हैं, लाइवलीहुड उसमें बहुत मजबूत है। अगर हम कहीं भी देखें तो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस से जुड़े हुए हैं, जो उनके आर्थिक पहलू हैं उससे जुड़े हुए हैं। हम कोई भी काम देखें तो कहीं ना कहीं वो उनके न्यायोचित व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो भी उनका है। और इस सब चीजों में अगर हम लोग एक दूसरे के अनुभव को आपस में नहीं लेंगे तो हम किसी भी आंदोलन को मजबूती से नहीं कर सकते। आवश्यकता इस बात की है कि जो अलग अलग बिखरे हुए नेटवर्क हैं उनको एक मंच पे लाया जाए, और विजय प्रताप जी जैसे लोग हैं, रघुपति जी जैसे लोग हैं, इनको नेतृत्व देना चाहिए कि ये उन सब लोगों को, क्योंकि इनकी उस प्रकार की एक स्थिति है कि अगर किसी को कड़वा भी कहेंगे तो शायद वो स्वीकार करेगा। तो इनको अपना जो कार्यशैली उसमें बदलाव लाना चाहिए और ऐसे लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश करनी चाहिए जिनसे हम लोगों को कुछ उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। और लीडरशिप में मतलब अगर ये लोग थोड़ा सा सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो निश्चित रूप से हम ये, चूंकि ये क्लाइमेट चेंज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये सब चीजों का समावेश इसमें जुड़ा हुआ है और हम सब लोग जंगल जमीन और जड़ से जुड़े हुए हैं, तो उससे जो जुड़े हुए आंदोलन है उसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। और कनकुन हमारे लिए एक छोटा सा माइलस्टोन है, इससे आगे हम लोगों को बहुत कुछ करना है और जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए। I'm very happy that as a chair I rarely am coercive, and this time I coerced Sharad ji to speak, and he was so profound that I will not be able to do justice to the what he said. It was very comprehensive. I just give 3-4 what I think are the salient points, but we'll always have the time during lunch, and I would urge those who don't understand Hindi to connect with him, because it was a very, very important contribution which explains the entire effort and the perspective. I just flagged the points what I thought are important. First, he said that we are more focused in our approach in a event mode, one event after another, and we should switch over to the process mode. Second point he made was that in South Asia we have the capacity, which was demonstrated in Mumbai 2004 World Social Forum, but we don't always use that capacity to build broad-based alliances. In building alliances, we have to be inclusive, we have to give platform to even those with whom we don't agree. And this plurality of contending ideologies and perspectives is necessary, particularly on an issue like climate change, because this is an issue which involves the entire society. So the plurality of ideologies has to be there. Third point he said was that Indians should be, the South Asian neighbors look towards Indian civil society as well, but we have the tendency not to be sensitive and we sometimes become domineering like our establishment, and that reflects in the overall alliances. So Indians have to be do this twofold. One, they should shoulder the responsibility of taking lead, and second, while taking lead, they should not become domineering. This is a kind of double-edged or double caution responsibility which we have to. India, such a large country, and we tend to become only amongst ourselves. Next point he made was, I am not saying in the chronological fashion, that we have been weak in sort of pressurizing our governments. Unless we are able to influence the policy planners, the member parliaments, that has been one singular weak area, and we must concentrate on that.
Then he about the coming back to the process point, the institutional design of the donor agencies and of NGOs is such that there are each donor agency likes to have its own unique selling point and its own agenda. So the whole vision becomes content on same issue contending networks, which is not necessary. And sometimes donor agencies through their institutional design promote this kind of segmentation. I will not say fragmentation, I'll say segmentation. And we can't coalesce our forces. So these were the basic points, and it should the whole process has to come out of the project mode, it has to come out of the event mode, and we have to understand the linked issues. Then he said that he mentioned some examples of some individuals who have this experience of building alliances. They must in this sector also, they must build this alliance. And this issue is linked with all kinds of other critical issues, so that alliance has to be built by those individuals who have this experience of having done this in the past. कुछ महत्वपूर्ण बात छूटी है सर? So now we thank all the panelists, and this session is closed. And before we move for lunch, we have to have the next session. So I invite Bharat Bhushan ji, Nallikant ji, Raghupati ji, ML Yadav ji, and Jayesh Bhairavya ji. All of you are invited on the dais, and you will be happy to know that chair for the next session, in which Alimuddin ji, Nilab Mishra ji, Sanjay ji are speaking. Shravan Garg ji is already here, so we must welcome him by clap. सर आगे आ जाएगा, आप लोग मंच पे आइए. दोबारा से नाम पढ़े जाए. नलनी जी इधर ही आ रहे हैं ना, बाहर तो नहीं जा रहे. रघुपति जी आइए. आइए सर, अब आपको चेयर करना और सुनाना है नाम. हमने मेरा काम हो गया, अब आपका स्वैपिंग हो रहा है जी समय के हिसाब से. मैं अंत में मैं बैठूंगा अंदर. ये आप के अध्यक्ष का मैं यहाँ से ना वो कहीं जा पकड़ा है लोग बस इस काम के लिए. सब आगे स्पीकर ऊपर. हाँ चलिए. विजय सबका परिचय करवा दो. हाँ, श्रवण गर्ग जी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, और वो शुरू से इस सवाल से हम लोगों से जुड़े हैं. हम बहुत व्यस्तता के बावजूद वो is the group editor of one of the largest circulating newspapers of India, and whenever we request him, he always finds time.
in spite of his very, very busy schedule. So we are very thankful that, like in the past, today also, he was kind enough to accept our invitation and share this session. This session is on the voices from the grassroots, and Nalini Kanchi from Jharkhand and Bihar, and Jayesh ji from Gujarat, Raghupati ji from Bihar, and Bharat ji from UP. They will be making presentation on their grassroots experience of climate change related issues. So now it's all to you. We can start from this end. Nalini ji. After chair's remarks. ठीक है, let us start the discussion. I would like to mention only two things. First thing, that we have been discussing an important issue in the media for the last few days, that the whole media, the sanctity of media has collapsed. This is what is being talked about, that you can get anything published by paying money to newspaper writers and editors. And everybody is talking about the meanness of paid news these days. It is a very hot topic being discussed in the media, that you cannot depend on media. I would say that you cannot depend on media as much you cannot rely on most voluntary organizations. The media has lost, if the media has lost its credibility, so has voluntary organizations or NGOs have lost. So, how to strike a balance? The point is, so my submission has been that I am doing journalism for the last 40 years and I have never faced any problem. I never did encourage or participated in the paid news. I was given full liberty by my proprietors to do whatever I want to do. And my proprietors have been very kind to me. They never objected to whatever I feel like writing or expressing. It depends on individual media persons that how he or she would want to discharge. The submission was that nothing has collapsed in the media, as not all has collapsed in NGOs and voluntary organizations. In each media organization, you will find good people working and they are making full use of their freedom. I'm taking what Sharad Joshi ji had said, I'm taking it further, that if all such media persons could be brought together on a single platform on certain issues, we can do lot many things, as we are discussing the issue of bringing together like-minded people from among the voluntary organizations. This is one point. Now, the entire issue of climate change, how I perceive is as the issue of water conservation, the issue of deforestation, the issue of seeds, the issue of agriculture output, the issue of pesticides, the issue of biodiversity. Lot many organizations are working on these subjects in different directions. If the one issue of climate change is addressed honestly, you will find that all such issues are tackled more efficiently than ever. What is required is that the people who are working in different fields, say somebody is working in water conservation,
in seed development, in promoting organic agriculture. There are so many, in preserving forests. Now, have you made any effort to bringing all these people together and making an effort to see that the core issue is climate change? If the climate change issue is not addressed, then their efforts directed in ensuring good agriculture or this thing will never be addressed. This is one point. Second point is South Asia. I've had the fortune of traveling with the Prime Minister to G20 summits. I was recently in Korea and before that I was in Toronto. A major change is taking place in India's foreign policy, and that is we have been so far neglecting our neighbors in the sense that the South Asian countries. We never paid so much attention as being paid in the recent past. The PM made a point to visit the countries like Vietnam, for example, South Korea, certain other countries of Japan he visited, Malaysia he visited. Now it is a time. Now there is a confrontation going on between these countries and the developed countries on certain issues of sharing the prosperity, wealth of the world. If we can make use of the Copenhagen, what was there? There was confrontation between the developing countries who are consuming less and who are on the threshold of revolution or trying to develop themselves industrially. They are being asked by the developed nations to emit less carbon. They are being controlled, they are being pressurized. Now India is trying to win over their South Asian neighbors. So if we join the political stream, we means all who are sitting here or all who are working outside this hall on the issue of climate change, we can make a good presentation before the government and we can ask the government that you should hear our voice also. And you can make use of the media. Media has not been properly educated, I would say. Media is very open and there are good people in media everywhere. The only thing is that they are more exposed to political issues, more exposed to corruption, more exposed to health issues. So very little awareness about the climate change. But no effort has so far been made by any agency, including government, to rope in the media on this important issue. So if an attempt could be made on behalf of this organization or a group of people to involve media organizations, media, individual persons, I would say, not media as a whole, but in each media you will find one or two or three good people who could be more sensitized, who could be roped in, who could be educated, then I think you will find a better coverage in the media, which is not available right now. So let us now start our discussion, and this is what I was thinking of making a point. Thank you very much. ये ले लें आप। मेरा नाम नलिनी कांत है। मैं अभी
जो पूर्व वक्ताओं ने बात रखी सर जी और पूर्व पैनलिस्ट थे और गर्ग साहब, उन्हीं के बातों को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की में जो समस्याएं हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में या जलवायु संकट के संदर्भ में, उसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ संक्षेप में। झारखंड का नाम लेते ही वहाँ पे जो दो महत्वपूर्ण देवता हैं, वीर और बुरु, यानी जंगल और पहाड़, ये दो नाम आते हैं और ये वस्तुतः झारखंड के दो आंख हैं और यही पालनहारा है उस राज्य का और यही उस वहाँ की संस्कृति को गढ़ता भी है। लेकिन और यही वो इतना छोटा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद वो उस राज्य में 7 जलवायु क्षेत्र हैं। पूरे जंगल पहाड़ जलवायु क्षेत्र का रांची की अपनी अलग विशिष्टता रही थी। वो रांची वही शहर है जहाँ पे मुश्किल से लोग 7-8 दिन पंखा चलाते थे और अब तो एसी का भरमार है उस पूरे शहर में और खदान रहे हैं। और केवल प्राकृतिक विविधता भी नहीं है, वहाँ की जो जनसंख्या की विविधता जो है, आज भले ही लोग कहें 30% या 35% आदिवासी और बाकी गैर आदिवासी का विभेद देखें लोग, लेकिन अगर आप झारखंड आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो वो 3 जो नायक थे झारखंड आंदोलन के, शिबू सोरेन जो आदिवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व करते थे, शैलेंद्र महतो और ए.के. राय, ये तीनों 3 जातीय या 3 सामुदायिक समूह, विभिन्न सामुदायिक समूह के लोग थे जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो इस तरह का जो एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनता है पूरे झारखंड का और अपनी अस्मिता बचाने के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग की गई। दुर्भाग्य से वो जिस स्त्री का एक गढ़ा गया था, परिकल्पना की गई थी, आज वो स्त्री को जो बाकी समुदाय है या जो मल्टीनेशनल है वो एक वेश्या के रूप में देखता है और हर समय व्यभिचार करने की एक परिकल्पना करता है। और इसीलिए वो 10 साल की यात्रा में वो जो अगर आप देखें तो 8 मुख्यमंत्री बने और हर एक मुख्यमंत्री वहां पे आते हैं और MOU साइन करते हैं और खानों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि हर एक जगह प्रतिरोध है वहां पे। तो जो पूरे खदान का, क्योंकि एक बहुत उनको लगता है कि ये बहुत पोटेंशियल स्टेट है, यहाँ पे इतने मिनरल्स हैं और तो इसका हमें दोहन करना चाहिए और इसके वजह से उस राज्य में लगातार एक खनन की प्रक्रिया और या जंगल काटने की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है और उस राज्य के प्रति जो एक सोच में परिवर्तन हुआ है, एक सुंदर स्त्री से वेश्या के रूप में देखने का, वो एक बड़ा ही एक दुखदाई और शर्मनाक यात्रा है पूरे 10 साल का जो झारखंड राज्य की। और माइनिंग के वजह से और वहां पे अगर आप हर एक 5 किलोमीटर पर एक नदियां मिल जाती हैं आपको और नदियों को जोड़ने के लिए जलवायु जुड़िया, जिसको छोटे नाले के रूप में जानते हैं हम लोग, वो आपको हर एक जगह मिलता था। और इसी वजह से आप अगर जो मैंने 7 जलवायु की बात की तो वहां पर जल प्रबंधन के भी अलग अलग तरीके रहे हैं। यानी पलामू एक राज्य एक कुछ सिरे पर है या उससे जुड़ा हुआ इलाका जो है, वहां पर आहार पेयन की व्यवस्था थी और सबसे अगर आप सिंचाई के पुराने दस्तावेजों को देखें तो सबसे अधिक सिंचाई वहां पर आहार पेयन से होता था। वही दुमका में या देवघर में या संथालपुर प्रमंडल में तालाबों का एक श्रृंखला मिलेगा आपको और वो हर एक जगह पर और वो हमारे सिंचाई के साधन हुआ करते थे और हर एक शहर में जो था वो एक तालाब दूसरे तालाब से जुटा हुआ था। मैं अपने दुमका शहर की बात करता हूँ, सिपहाड़ से एरियल दूरी मयूराक्षी का मुश्किल से 3-4 किलोमीटर होगा। सिपहाड़ मोहल्ला जो है वो थोड़ा जल संकट का था, लेकिन मयूराक्षी के किनारे वहां आर्टिजन वेल है, क्योंकि वो इतना एक दूसरे से एक जुड़ाव रहा है कि वहां इतनी जल की उपलब्धता रही है। और उसका एक सबसे बड़ा प्रतीक है कि आज से 20 साल पहले हर एक रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा तालाब उस राज्य में, अन्य राज्यों में भी है, उस राज्य में आपको मिल जाएंगे और वहां अभी भी जल है। हालांकि वो बहुत नेग्लेक्टेड हो चुका है क्योंकि वहां पानी भरे जाते थे वो। तो इस तरह से जो वहां, और दुर्भाग्य से आज इतनी नदियों, तालाबों, आहार पयन, इवन जलप्रपातों वाला जितने जलप्रपात वहां हैं, उस सारे इलाकों का संपन्न राज्य आज अपने कोख में सबसे पॉल्यूटेड नदी दामोदर को रखी हुई है।
जो पूरे देश में सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, वो दामोदर उस राज्य में बहती है। और क्योंकि वो अब पानी का जो है वो नजरिया बदल गया, जैसे कि राज्य का हमारा नजरिया सुंदर स्त्री से वेश्या क्या हो गया, अब वो पानी लोग के हट करके कारखाने के लिए हो गया, क्योंकि उसके एजेंडा जो है अब वो पानी जो देख रहे हैं माइनिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो वो पूरा का पूरा जो संदर्भ है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। और इसी वजह से लगातार वो राज्य अकाल के चपेट में आता रहा है, पिछले 3-4 साल से अकाल के चपेट में। और जब भी कभी भी उत्तर भारत के अकाल की बात होती है, मतलब अगर आप राजस्थान को छोड़ दें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल, तो पलामू नंबर 1 में आता है। सबसे अधिक शीर्ष पर पलामू होता है, क्योंकि वहां पे पलामू का मतलब ही, जैसे आप पलामू की चर्चा करेंगे वो आपके आंखों के सामने वो अकाल, भूखमरी, ये तमाम चीज आपके सामने स्पष्ट होने लगता है। इसी वजह से सबसे अधिक पलायन उस राज्य में, क्योंकि एक तो पलायन का लंबा इतिहास भी रहा है और पलायन का सिलसिला वहां पर लगातार चलते रहता है। और नरेगा और तमाम चीजों के बावजूद भी वो, क्योंकि नरेगा का जो एजेंडा है वो रोड बनाना है, नरेगा का एजेंडा जल संचयन की संरचना को तैयार करना नहीं है, पेड़ पौधे लगाने नहीं है, उनके फोकस दूसरे हो गए हैं। और इसी का एक विद्रूप रूप है, क्योंकि अगर आप एक सामान्य जन की में बैठा हुआ है, अगर कोई, मैं कहूं कि मैं झारखंड से रहने वाला हूं, तो आज की तारीख में अधिकांश मध्यम वर्गीय आदमी हमसे यह अपेक्षा करेगा किराए में ले जाकर के कि एक नौकरानी ला दोगे, क्योंकि वो वहां की स्त्रियां, मतलब वहां की लगातार जो बेटियां हैं उस इलाके में गुम होती जा रही हैं और वो सारा ट्रैफिकिंग में जुटता जा रहा है। और इस तमाम चीजों ट्रैफिकिंग का जो साथी ट्रैफिकिंग में काम कर रहे हैं, मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर वो जलवायु परिवर्तन और अनाभाव, भूखमरी से जोड़ कर देखें, क्योंकि वो इससे उसका एक गहरा रिश्ता रहा है। और हर एक साल हजारों लड़कियां वो राज्य हजारों बेटियों को खोता जा रहा है, क्योंकि वो कहां गुम हो जाती है किसी को नहीं मालूम है। और अगर आप किसी भी महीने के अखबार के कतरन को देखेंगे तो आपको 150-200-400 रिपोर्टेड न्यूज है उस राज्य का। और लड़कियां ही नहीं गुम हो रही है, मतलब वो कुछ जनजाति जो है, मैं एक खास जनजाति पहाड़िया की बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये वही पहाड़िया जाति है जिसने कि 1857 से पहले भी अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजों को औकात में लाके रख दिया था। अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया था, जबकि बंगाल का जो बड़ा अकाल पड़ा था, जिसकी जिक्र अक्सर हुआ करती है आजादी के पहले, उस अकाल में भी इस राज्य, ये पहाड़िया जाति, आमतौर पे लोग अकाल में नीचे उतरते हैं पहाड़ से, ये जाति नीचे से पहाड़ पे गया, क्योंकि उसको लगा कि वो सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र है और पहाड़ जो है हमें जान बचा लेगा। वहां पे उपजने वाली बरबट्टी, वहां पे उपजने वाले मकई, वहां पे उपजने वाले कोकुन हमें बचा लेंगे। और इसी वजह से, क्योंकि कोकुन, बरबट्टी एक ऐसा है जिसमें कि छोटी मिट्टी की परत चाहिए और स्लोप, मतलब पानी का अटकाव नहीं होना चाहिए, तो बरबट्टी की खेती वहां होने लगी। और इसी वजह से वहां पे बरबट्टी, वहां का बरबट्टी, संथालपन्ना का बरबट्टी बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के बाजारों में जाया करता था। और कोकुन, और इसी वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा कैश क्रॉप था उनके लिए जिसमें लागत शून्य था, पूरा का पूरा मुनाफा था। लेकिन आज चूंकि पहाड़ों का क्षरण हुआ है और बरबट्टी आने लगे हैं अब बर्मा से और साउथ एशिया और कंट्री से, चीन से आप सिंथेटिक सिल्क आने लगे हैं, तो अब वो पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया है। और यही बरबट्टी, पहाड़िया, पहाड़ के वजह से वहां पे महाजन आए और यही द्वंद्व को लेकर के पूरा झारखंड आंदोलन चला। आज उस इलाके में मतलब द्वंद्व तो है, लेकिन वो जो एक दुश्मन जो है वो दृश्य से अदृश्य हो गए, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अब दिखती नहीं है। पहले तो था कि भाई ये महाजन है, ये हमारा शोषण कर रहा है, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारे दुश्मन हैं थे वो अब अदृश्य हो गए हैं। अब समझ में नहीं आता कि हम किससे लड़े, तो वो मतलब पूरी, और इसके वजह से, और उस इलाके के अगर आप पूरे नक्सल आंदोलन को देखें या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी देखें, तो क्लाइमेट क्राइसिस को, मुझे तो लगता है क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ाने के लिए
सुनियोजित ढंग से ऐसे राज्यों में और ऐसे देशों में भी, अगर अफगानिस्तान का और जगह का देखें आप, तो उस इलाके में नक्सल हो, टेररिज्म हो, ये सबको पैदा किया जाता है और उसको एक अस्थायी समस्या बनाई जाती है, क्योंकि वहां पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं हो। तब आपको माइनिंग करने का, फॉरेस्ट का दोहन करने का, क्योंकि जिस तरह से नक्सल आंदोलन के नाम पे पूरे सारंडा जंगल को तबाह किया गया, पूरा सारंडा जंगल तबाह हुआ है, तो वो एक और नक्सल उपद्रव जिस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि नक्सल आंदोलन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि नक्सलवाद से कोई लेना देना नहीं है, केवल उनके मन में आक्रोश है। उनको लगता है कि इस आक्रोश को अभिव्यक्त करने का एकमात्र रास्ता यही। थोड़ा अपन 2:15 पे खत्म करना चाहते हैं। जी बस एक अंतिम। तो इस तरह के जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसका भी ये भी एक सुनियोजित षड्यंत्र है क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ाने में। धन्यवाद। बहुत ही एक इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट नलिन कांत जी ने कहा है, और वो मेरे लिए भी काफ़ी शिक्षा का मामला है पत्रकार के रूप में, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो, इसमें भी एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो यू कैन डू एवरीथिंग। इफ देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यू कैन प्ले विद द क्लाइमेट, you can do exploitation of mining resources, you can do rape with the forests, and there is no law and order situation. So he has raised a very basic issue, I would say, that the very issue of climate change has a lot to do with the political stability. And there are people who would never want political stability, so that there are no such concerns being expressed from any quarter, maybe climate change or any other thing. I think Nalin Kanji has made a very valid point, and we should all, I mean, not exactly on this topic of climate change, but even otherwise, we should further explore this thought and to take it further, that I mean the areas where you don't have political stability, how the things are different than the areas where you have political stability, and things are, I mean, there could be comparative studies to, I mean, make this point still clearer. Thank you very much. भारत भूषण जी, आप। साथियों नमस्कार। भारत भूषण नाम है मेरा। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इसके 4 क्षेत्र हैं अलग अलग, पूरब, पश्चिम और मध्य और बुंदेलखंड। अगर हम जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से और उससे होने वाले प्रभाव की दृष्टि से अगर देखें तो चारों क्षेत्र के अलग अलग प्रभाव हैं हमारे क्षेत्र में। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ बाढ़ है, और मध्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बाढ़ और सूखा दोनों है। बुंदेलखंड की बात करें तो वो सिर्फ सूखा है, और पश्चिम में भी मिला जुला ये स्थिति है। उससे जो प्रभाव पड़ रहा है वो खास करके जो अब इस साल जो निकल के आया, इस साल जो देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि जो मानव स्वास्थ्य है, जो हम लोगों का स्वास्थ्य है, वो बहुत प्रभावित हुआ है। इस साल काफ़ी ऐसे इस तरह की बीमारियां, जैसे अज्ञात बुखार के रूप में भी काफ़ी लोगों को देखने को मिला और काफ़ी मौतें भी हुई। अकेले लखनऊ शहर में करीब 72 लोग मरे जिनको कि बुखार आया और वो मर गए, और डॉक्टर या जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों ने उसका पता नहीं चला कि वो किस बुखार से या किस तरह की बीमारी से मरे। ये सारे स्वास्थ्य और खेती और पशुपालन, पशु भी हमारे यहाँ काफ़ी इस वजह से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अगर आप देखें तो दुधारू पशु खास करके ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए उस तरह के वातावरण हुआ करते थे
पशुपालन के लिए, खेती के लिए, उसमें बहुत अंतर आया है। अगर हम पिछले 10 साल का सिनेरियो देखें, खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात मैं करूंगा, 2000 में मई जून में बरसात हो जाया करती थी, और अगर इस साल हम देखें तो इस साल बरसात अक्टूबर में हुई है वहाँ, जिसकी वजह से 35% ही धान की खेती हो पाई है। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 35% की धान की खेती से इतने बड़े प्रदेश और इतने बड़े प्रदेश की आबादी किस तरह से पोषित होगी और किस तरह से उसका जो आजीविका का क्षेत्र है वो कैसे सुनिश्चित होगा। और सबसे दुखद बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आज की तारीख में, सरकार की तरफ से भी, कंपनियों की तरफ से भी। कई सेज ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश को प्रभावित करते हैं, और उनकी तरफ से जो निर्माण कार्य चल रहा है और सरकार की तरफ से जो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे और अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, लखनऊ के बारे में आप सब लोग सुनते पढ़ते रहे होंगे, पूरा पत्थर का बना दिया गया है लखनऊ, आधा से ज़्यादा लखनऊ पत्थर, लाल पत्थरों से जड़ दिया गया है। और इन सब का जो परिणाम आ रहा है वो गरीब, जिस गरीब की सरकार कही जाती है हमारे प्रदेश की सरकार, दलित खास करके, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आज की तारीख में उसके बच्चे, वो खुद और उसका परिवार जहाँ वो रह रहा है वहाँ वो रहने की स्थिति में नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि खेती ही नहीं हो रही है, वो सारा खेती पर डिपेंड करने वाला समुदाय अब वहाँ से पलायन कर रहा है। और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक माइग्रेशन के मुद्दे पर एक अध्ययन भी किया था। 20% माइग्रेशन पहले की अपेक्षा हमारे क्षेत्र से बढ़ा है, और वो माइग्रेशन कहाँ हो रहा है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो बता के पूरा का पूरा परिवार चला गया और बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है, उसके अपने लोगों को भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ है। तो कुल मिला के अगर देखें तो सरकार जो हमारी है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसका भी ध्यान इस मुद्दे पर नहीं के बराबर है। और अगर सिविल सोसाइटी की बात करें तो सिविल सोसाइटी में, जैसा शरद जी ने अपनी बात कही, अपनी बात में कहा, बिल्कुल सही बात है कि हम इवेंट और प्रोजेक्ट और संसाधन के इर्द गिर्द रह करके ही इस मुद्दे को भी देखने लगते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक प्रयास हम लोगों ने अपने पानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्थानीय स्तर पर किया है। वो प्रयास ये है कि जो जैविक खेती है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है, और जो पानी का संसाधन है नरेगा प्लानिंग के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया है करीब 16-17 पंचायतों में। लेकिन वो बहुत छोटा प्रयास है। ये प्रयास पूरे अगर उत्तर प्रदेश की आबादी और क्षेत्र को देखा जाए तो बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन इस तरह के प्रयास की वहाँ पे बहुत आवश्यकता है। और पॉलिटिकल विल पावर तो नहीं के बराबर है इस मुद्दे को लेकर के। अभी पंचायत का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग को और एग्रीकल्चर को लेकर के एजेंडे में शामिल किया जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। तो ये सारे स्थितियां हैं। और सबसे दुखद बात जो है वो ये है कि हमारी जो सरकार है, हमारे प्रदेश की जो सरकार है, उसकी जो मुखिया हैं, उन्होंने तो इस पे बात करने से भी मना कर दिया। कई बार कोशिश की गई, उन्होंने इस पे बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा सब बनाई गई बात है और ये ज़्यादातर विदेशों से उठाई गई बात है, इसलिए इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक डेलीगेशन हम लोगों ने मिलने की कोशिश की थी और बात करने की कोशिश की थी, तो ये उनका जवाब था। और ये दुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शायद हम सब लोगों को मिल के सोचना पड़ेगा। ये आने वाला समय मुझे लगता है कि और भी कष्टदायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 पॉइंट्स इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो भारत भूषण जी ने कहे। एक पहला है माइग्रेशन का। He has made 2-3 good points. The first being the issue of migration. So far we have been knowing only about Bihar as the most affected state from where most people are migrating to.
other states. But the things have changed in the recent past in the sense that when we studied the situation in Punjab agriculture, we found that they lacked Bihari labor. Not many people from Bihar migrated during the recent past, and they faced a huge crisis of having a cheap labor. It means that migration from Bihar has to an extent been contained there. And it may be having a lot to do with Narega and other things and maybe the local employment. But this revelation that migration from Uttar Pradesh has increased is a new phenomenon. I think that requires a lot of attention and focus. How do we study? Second thing, that the monsoon which was expected in June arrived in October. Now, the shortage of rainfall and the affecting the agriculture productivity may have led to migration. This is going to increase. Now, Uttar Pradesh is the most important state of the country. Anything happening in Uttar Pradesh affects the entire nation. I mean, politically, it's the largest. I mean, Uttar Pradesh is one state which tries to center the maximum number of members to parliament, and they decide. Uttar Pradesh decides the fate of the nation, in fact. So anything happening over there would largely affect the fate of the entire country, and not much focus has been attached to the situation in Uttar Pradesh. Even in our discussions, I have found that among the volunteer organizations, NGOs and all these things, Uttar Pradesh is not represented the way it should be represented. I mean, we find many people coming in from Bihar, for example. Of late, Rajasthan has always been there, but Gujarat has started representing, Madhya Pradesh has started representing, but the Uttar Pradesh and the areas he focused, I mean, Bundelkhand, Purvi Uttar Pradesh, Western UP and the hilly areas. And the entire thing is totally different from one corner to another. I mean, the very issue of climate change cannot be addressed unless we have factual human resource index, I mean, human resource data of Uttar Pradesh. So I think Bharat Bhushan ji can help us in further consolidating the information about Uttar Pradesh, and we'll see how best we can work on Uttar Pradesh. Now I would request my friend from Gujarat to enlighten us. Thank you, Chair. I'm not that much expert on the subject because I'm basically from a man of a law field, but I'm definitely share some good experience and bad experience of the Gujarat state, which is very much concerned with the global warming and climate change. What happened before 3 years, there was a very heavy cyclone in Bhuj, Kutch. You might be aware that Gujarat is having the largest coastal line area in India. My 6 students of a law college were on a tour to Kutch, and out of 6, 3 were taken away by the cyclone. Now the question was whether it was a nature film or it is an effect of the climate change, or how the level of the sea is now increasing, and because of that with the global warming the cyclone took place. That question was moving in my mind, and I met Ajay ji and Joshi ji. Then we discussed a lot, and they had talked about the solidarity and how we had participated in United Nations and other world conference on a different issue. But so far, this is very important issue. How we can come out from that. So we started working, and while doing that, in Gujarat, in particular in Ahmedabad city, more than 3 lakh rickshaw drivers are there, and they were all driven by with the help of the petrol and the kerosene. So before 5 years, Ahmedabad was the highest polluting city, but
there was a big movement started, and we also took a part in that, and convinced the all rickshaw driver association and the poor people, poor drivers who are residing in a slums area, and convinced them that please convert your machinery of rickshaw in a CNG and start using the CNG. Then the question of the how to make them understand what is the important when they are getting a kerosene for 1-2 rupees over there in a black market, and then CNG they have to stand in the queue, who will supply this. Then we made them understand the importance of the CNG, where we are going, how ultimately your health is suffering, your all children are not keeping proper health, and therefore the all civil hospitals are flooded. And then they started understanding, and you will not believe that within a 6 month, more than 1 lakh driver have accepted the proposal, and all have shifted to the CNG. And now the results are coming up. Now, slowly, what we feel that let the charity begin from home. What our chairperson has stated and my co-colleague stated, that if we want to adopt some policy, if we want to put some good action, without dependency of any developed countries or their policies, as Saratji said, that we have to start our own initiative. So what I personally felt, that whether somebody like or not like, but last 10 years there is a stability in the political system in the Gujarat, and a good program have been initiated, and according to my details, the Gujarat is the only state who have started the climate change department, totally independent climate change department, and the dedicated secretariat, I must name him, Dr. S.K. Nanda, who is heading this department. He took a very eagerly, he was conveying me that, Jayesh, I want a youth from the law students and the grassroots level, that who can start developing the sense of the global warming and to save the water harvesting, and started a mass movement in a grassroots level. And now the thing is that at present India is taking proud of Gujarat being a growth engine. The Planning Commission has awarded maximum fund to the Gujarat state. I am not a spokesman of a Gujarat, but what I personally feel, that need is a mass awareness about this issue, because the poor agriculturalists and the laborers who are going to suffer of this, that in a 3 lakh fishermen, 2 lakh other workers who are joined in a fishing business are suffering with the great extent. So business of a fisherman is going down, and they are now coming and rushing to the urban cities. Ultimately, the problem of an urban city, because of they are losing their business in the coastal line. So why the coastal line is disturbing, and that is global warming, and therefore now global warming and the control of our pollution control laws, if we can at least take a lesson from our laws, and if we can put a very strong mass awareness program and pressurize the government and other institutes to follow it properly, at least we can save something. No doubt, by taking our issues as a neighbors and the South Asian solidarity, this is what we have been given task about, the talk about our state. But there are good stories. Now Gujarat is coming up with a lot of investment. The foreigners are now coming with a big investment and setting up the industries. Then we put a question whether this industry is at the cost of environment. Can we compromise environment at the cost of industries? Both is required to sustain our livelihood, for our future.